alkane, haloarine, राइट। तो लेसन कंप्लीट हुआ है, बट 20 डेट नहीं तो 21 डेट का एक वीडियो मिस हुआ है, अपलोड नहीं हुआ, तो वो कल का क्लास में आ जाएगा, मतलब आज का क्लास में रहेगा। तो वो वीडियो है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ haloalkanes, stereochemical aspects of nucleophilic substitution reactions of haloalkane। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ stereochemical aspects of nucleophilic substitution reactions। Stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction. This is also very important topic. In this, we are going to learn one is PPL, plane polarized light. Second one is optical activity, and third one is chirality, and fourth one is retention, and fifth one is inversion. These are the stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction. First one, what is PPL? PPL means plane polarized light. This plane polarized light will be formed from normal light, and normal light passes from nickel prism, then this light will be converted into plane polarized light. Actually, normal light having different colors of light because of different wavelengths. Different wavelengths shows different directions. For example, this is the actual light of sun or actual light. This is passed from nickel prism. This is nickel prism. When this light passes from nickel prism, then this light will be converted into same wavelength of light, otherwise all the directions of light will be equal, means similar direction पे आ जाएगा, wavelength सेम हो जाएगा, लाइट सब सिमिलर डायरेक्शन पे आएगा। Then this light is known as plane polarized light, means ये सब plane polarized light gain करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। That instrument is Polaroid and polarimeter. Polaroid मीटर से नॉर्मल लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देन व्हाट इज द यूज ऑफ दिस PPL? When this PPL, plane polarized light, is passed from the sample, haloalkane sample, when this plane polarized light passed from sample of solution, then the light will be rotated left side or right side. Then that compound having optical activity. Optical activity means plane polarized light कोई भी सैंपल से पास करने के बाद ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट साइड नहीं तो राइट साइड रोटेट होगा तो वो कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिविटी है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट साइड राइट साइड होगा तो दैट कंपाउंड इज नोन एज optical active compound, and the compound which does not rotates the plane polarized light, that compound is known as optical inactive compound. Optical active compound, and second one is optical inactive compound.
ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड मीन्स ये कंपाउंड में से लाइट पास होगा तो लेफ्ट साइड नहीं तो राइट साइड बेंड हो जाएगा, एंड वो कंपाउंड में से लाइट पास होगा तो लेफ्ट साइड राइट साइड बेंड नहीं होगा, स्ट्रेट बाहर निकालेगा। तो स्ट्रेटली बाहर निकालेंगे तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होता है। मीन्स वो सॉल्यूशन में जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, एंड यहाँ पे जो सॉल्यूशन में कंपाउंड है वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे लाइट बेंड होता है, दैट बेंडिंग टूवर्ड्स राइट साइड और लेफ्ट साइड। इन केस when plane polarized light passes from the sample, then the light will bends towards the right side, bends towards right side. Then otherwise this plane polarized light rotates the sample to the right side, otherwise clockwise direction. Then that compound is known as dextro compound. Dextro compound means प्लेन पोलराइज लाइट के वजह से कंपाउंड और लाइट राइट साइड रोटेट होगा तो, नहीं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो कंपाउंड इज नोन एज डेक्स्ट्रो कंपाउंड. दिस डेक्स्ट्रो कंपाउंड इज इंडिकेटेड विथ कैपिटल D or small d, and its rotation angle is denoted by positive sign. Rotation angle. In case when the optical light, plane polarized light rotates to left side, otherwise rotates the substance to the left side, then that compound is known as LIGO compound. लेफ्ट साइड रोटेट होगा तो यहाँ पे लिख रहा हूँ. फर्स्ट आई विल इरेज ऑल दीज थिंग्स. Okay. When plane polarized light rotates left side or anti-clockwise, direction, anti-clockwise direction होगा तो that compound is known as LIGO compound. LIGO compound. And this LIGO compound indicated with capital L or small l, and rotation angle is नेगेटिव साइन से इंडिकेट करता है. मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट सैंपल से पास होने के बाद लेफ्ट साइड नहीं तो राइट साइड रोटेट हो सकता है. तो लेफ्ट साइड नहीं तो राइट साइड रोटेट होगा तो दैट कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड. तो इन केस लाइट इज रोटेटेड टुवर्ड्स राइट साइड, देन अदरवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then that compound is known as dextro compound. It is indicated with capital D, small d, and rotation angle is positive sign. When that light will be rotated towards anti-clockwise direction or left side, then that compound is known as LIGO compound. L, small l, and negative sign से indicate करते हैं. In case light does not rotate any side, and that compound is known as optical inactive compound. Right. Then here, which type of compound shows optical activity and which compound shows optical inactivity. तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा, दैट इज chirality. Chirality is very important to understand this optical activity and optical inactivity. तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर वाइज नहीं देख रहे हैं. तो फर्स्ट PPL optical activity, next one is chirality. Here our second topic is chirality. What is chirality? First we'll understood optical activity, we know very well. First we are going to learn what is chiral carbon and what is chirality. Chirality means when haloalkane having 4 bonds with the carbon
these four bonds will be different, then this carbon is known as chiral carbon. Chiral carbon means कार्बन के साथ जो फोर बॉन्ड्स हैं, फोर बॉन्ड्स डिफरेंट होगा तो chiral कार्बन. फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड ये फोर बॉन्ड्स डिफरेंट होगा तो chiral कार्बन, and this is known as chirality. Okay, in case when the carbon having four different groups or four different atoms, example CH3 C2H5 Cl Br, this is chiral carbon. When the compound having chiral carbon and that compound shows asymmetry. एसिमेट्री मतलब जो कंपाउंड में chiral कार्बन होता है तो वो chirality बताएंगे, तो वो कंपाउंड एसिमेट्री बताते हैं. मतलब कोई भी डायरेक्शन एंगल से डायरेक्शन से कट करेंगे तो टू इक्वल ऑफ्स फॉर्म नहीं होगा, अदरवाइज मिरर इमेज डज नॉट फॉर्म. तो ये एसिमेट्रिक कंपाउंड मीन्स ऑल chiral कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर asymmetric compounds. And second one, in case in these four groups attached to the carbon, any two groups are similar, then that carbon is known as a chiral carbon, and that compound compulsory shows symmetry. Here four bonds are there. Example X, Y, Z, Z. Two groups are similar. 1, 2, 3. Chlorine, chlorine, methyl and ethyl. This carbon is known as a chiral carbon. And this achiral carbon containing compound shows symmetry. ये सिमेट्री बताएंगे, मतलब कोई भी डायरेक्शन से कट करेंगे तो टू इक्वल ऑफ मिरर इमेजेस फॉर्म होता है. क्लियर? This is chirality, symmetry and asymmetry. Compulsory chiral carbon containing compounds shows asymmetry and achiral carbon containing compound shows symmetry. Clear? And which type of compound shows optical activity? Here question is which type of shows optical activity. Which type of compound shows optical activity? The compounds which having chiral carbon asymmetry, that type of compound shows optical active compounds. Means जिसमें chiral carbon present होता है वो carbon containing compounds optical activity को बताएगी. Means these two compounds are optical active compounds. Optical active compounds. ये optical active compounds. The compound does not have chiral carbon or they will show symmetry. Those are known as optical inactive compounds. Optical inactive means chiral carbon जिसमें present नहीं होता है वो optical inactive होता है, जिसमें chiral carbon present होता है वो optical active होता है. With optical active, that may be dextro compound, that may be LIGO compound. It will go to spin polarized light left side or right side. But optical activity है कि नहीं हम लोग डायरेक्टली chiral कार्बन से फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड when the compound having chiral carbon, then the compound forms two mirror images. These two mirror images does not superimpose on each other. That mirror images are known as enantiomers. Enantiomers means मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, एग्जैक्टली सुपर इम्पोज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल टू हैंड्स, तो ये टू हैंड्स है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन. दिस इज डज नॉट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर. दैट्स वाई दिस टू देखने के लिए टू हैंड्स तो एक जैसे ही रहेगा, बट दीज आर नॉट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर. दैट्स वाई दिस टू मिरर इमेजेस आर नोन एज enantiomers. Right?
This enantiomer shows different type of physical properties, maybe boiling point, melting point, refractive index, etc. Right. Example, mirror images. ऑप्टिकल एक्टिविटी में एक आयरन होगा तो एक आयरन में क्या होता है, मिरर इमेजेस सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर. राइट. तो मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होगा तो एनांशियोमर से. ऑप्टिकल एक्टिव कॉम्पाउंड्स बताते हैं तो मिरर इमेजेस सुपर इम्पोज नहीं होता है. एंड नेक्स्ट वन इज रेजिमाइजेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज, तो ये सब एक लार्ज टॉपिक है तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. These are the terms very important to understand nucleophilic substitution, stereochemical aspects. And next one is racemization. In this racemization, or racemic mixture. Racemic mixture or racemization. Racemization is a process and compound racemic mixture. Which compounds are known as racemic mixture? The compound which can rotate plane polarizer light 50% right side and 50% left side. That compound is known as racemic mixture and this process is known as racemization. Means chiral carbon containing compound forms two mirror images. In the two mirror images, one mirror image rotates plane polarizer light 50% to the right side and another mirror image rotates the plane polarizer light 50% to the left side. The net rotation angle is 0 because one compound rotates 50% right side and another one rotates left side. Then net rotation angle will be 0 and net rotation angle will be 0 and this process is known as racemization, racemic mixture. ऐसे compounds भी होता है. एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिया है, एक बार ऑब्जर्व करो. ठीक है. racemic mixture means plane polarized light, optical activity, optical inactivity, chirality, achirality, symmetry, asymmetry, racemization and racemic mixture. तो ये 50% प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ्ट साइड राइट साइड रोटेट होगा तो नेट रोटेशन एंगल 0. देन दैट कंपाउंड इज नोन एज ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होता है. नेक्स्ट वन इज इन्वर्शन. इन्वर्शन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. इन्वर्शन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. एंड नेक्स्ट वन इज रिटेंशन. रिटेंशन एक्सप्लेन करने के बाद इन्वर्शन एक्सप्लेन करेंगे. राइट. रिटेंशन नेक्स्ट टॉपिक इज reattain. Retention means reattains when the reaction will be occurred, the formed product having same geometrical arrangements as compared to its reactant. मतलब reactant में जो geometry होता है, जो bonds रहेगा as it is same bonds product में present होता है. तो after reaction geometry of reactant does not change in the product. Means reactant में जो bonds हैं same bonds same position, means the position of bonds attached to the carbon means the spatial arrangement of groups or atoms attached to the central carbon are equal in the product. Then that process is known as retention. Example 2-methyl butane onol. 2-butanol भी लिखो, no problem. Sorry, 2-methyl butane onol. 2-methyl butane 1-ol. तो first 1 2 3 4
hydroxy group CH3, and this carbon is chiral carbon. 2-methyl butane 1-ol, 2-methyl butane 1-ol में first one 1 2 3 4 carbons are there, and one CH2OH group, and second one is hydrogen is there. Here hydrogen and हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप्स, तो इसका पोजीशन ऑब्जर्व करो, टेक्स्ट बुक में है CH2OH, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है बैकवर्ड डायरेक्शन पे रहेगा ये, तो ये डायरेक्शन बताने के लिए इसलिए यहाँ पे डार्क इंडिकेट किया हाइड्रोजन. व्हेन दिस रिएक्शन occurred with HCl, this reactant will react with HCl in presence of heat. तो यहाँ पे क्या होगा, nucleophilic substitution reaction, heat, this chlorine will substitute OH group. Then the position of spatial arrangement of groups does not change. Then 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन पे जो स्पेशल अरेंजमेंट पे है वही स्पेशल अरेंजमेंट पे रहेगा, मॉलिक्यूल चेंज नहीं होगा. क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन एज इट इज बैकवर्ड डायरेक्शन पे ही रहेगा, एंड बाय प्रोडक्ट H2O रहेगा. मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स डज नॉट changed in the reactant as well as product. तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका सेम ज्योमेट्री को यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म किया. दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज रिटेंशन. अनदर वन, the retention of configuration is the prevention of the spatial arrangement of bonds to an asymmetric center during a chemical reaction or ट्रांसफॉर्मेशन. एग्जाम मतलब स्पेशल अरेंजमेंट को वैसे ही प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, राइट. नेक्स्ट, इन जनरल इफ ड्यूरिंग ए रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो center is broken, the product will have the same general configuration of groups around the stereo center as that of reactant. Such a reaction is said to proceed with retention of the configuration. This is the example, retention. मतलब spatial arrangement of groups or atoms does not change in the reactant and product. Only the bond break between hydroxy group and carbon, and this chlorine will be replaced with hydroxy group. This is the example for retention. And another one topic is inversion. Inversion quite opposite to the retention. तो retention में क्या हुआ, reactant का जो spatial arrangement है, स्पेशल अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस नहीं हुआ प्रोडक्ट में. बट इन्वर्शन में क्या होता है, इन्वर्शन मीन्स एग्जैक्ट ऑपोजिट. किसका ऑपोजिट होगा, रिएक्टेंट में ग्रुप्स और एटम्स का जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो स्पेशल अरेंजमेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है. जिसमें चेंज होगा वो क्या होता है, इन्वर्शन होगा. एग्जाम्पल, इन्वर्शन, here inversion, reaction. One of the example is first one C2H5 and CH3. First carbon 1 C2H5 and another one hydrogen, and next one is here. Okay, this one hydrogen,
एंड अनदर वन इज मिथाइल ग्रुप। तो ये मिथाइल ग्रुप जो है बैकवर्ड डायरेक्शन पे अरेंज होगा CH3 एंड नेक्स्ट वन इज X। ओके, दिस इज रिटेंशन का एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, व्हेन दिस मॉलिक्यूल इज reacted with Y molecule, then this X will be replaced by Y। Here, ये मॉलिक्यूल Y के साथ रिएक्ट होगा तो सेंट्रल मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये जो कार्बन है कायरल कार्बन है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो X Y के साथ रिप्लेसमेंट होगा। द पोजिशन, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स विल बी चेंज। एग्जाम्पल, नाउ carbon and groups of first one is C2H5 does not change it, and hydrogen, this one is hydrogen, okay, and next one is ethyl group। C2H5 and Y is substituted like this direction. In this molecule, the spatial arrangement of groups will be changed। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिरर इमेज फॉर्म हो देखो, ये इथाइल ग्रुप तो चेंज नहीं, बट हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप ये डायरेक्शन पे है, मिरर इमेज है। But these mirror images are not superimposed on one another. That's why these two are known as enantiomers। तो आपका टेक्स्ट बुक में तो इसके डायरेक्शन पर नेक्स्ट वाई रिटेंशन का भी एक्सप्लेन किया, मैं डायरेक्ट ओनली इन्वर्शन एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में देखो, रिटेंशन में सी मॉलिक्यूल रिएक्टेंट जैसे वैसे ही, नो चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। हियर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी चेंज। यहाँ पे क्या हुआ, वाई आके रिएक्ट होगा तो ये पूरा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ वाई आके ये डायरेक्शन पे रिएक्ट होगा तो ये पूरा क्या हुआ, ये डायरेक्शन पे मूव, मतलब यहाँ वाई यहाँ से आके अटैक होगा तो ये पूरा 3 ग्रुप्स ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ गया। तो ये इन्वर्शन स्ट्रक्चर, दिस प्रोसेस इज नोन एज इन्वर्शन। दीज आर द टॉपिक्स स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्लियरली टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल में रिटेंशन, इन्वर्शन, रेसिमाइजेशन, ऑल द टॉपिक्स आर गिवन। इफ यू लर्न टेक्स्ट बुक देन यू विल गेट complete information about this। okay, this is the 20th class of 3rd period या 4th period, राइट। ये आपको क्लियरली समझ में आएगी तो नेक्स्ट फर्दर क्लासेस समझ में आ जाएगा। ऑलमोस्ट लेसन कंप्लीटेड है, तो इसका इंटेक्स्ट का भी एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट लेसन अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करूँगा, और उसके बाद इसमें डाउट्स होगा तो सब क्लियर करूँगा। इसमें भी जो डाउट होगा तो इसको नेक्स्ट लेसन के पीछे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, कंपलसरी एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, नोटबुक बना दो, नोटबुक में सब लिख के नेक्स्ट स्कूल रीओपन होगा तभी सबमिट करना पड़ेगा। राइट।